Yes, good afternoon, everyone. Welcome to the session of the placement training. So, today we will see about the practicality of the surveying or the practical aspects related to civil engineering in that surveying topic. So, in that we will see if you particularly see this chapter or this particular topic, the surveying. So, there is no requirement for the discussion of the numericals and other things. If we compare with the interview or placement, then or if you compare with the field work. So main part or main role of surveying is by using the instrument or by knowing the instrument which is related to the surveying. So as we have discussed, there are many uses for the surveying, as we have discussed that by measuring the land or by uh, taking the angles or horizontal distance, vertical distance, we have to use this instruments and we are using the theories of the surveying. So let's start the session now. So so it is not possible to there are many instruments are there for the if you have seen in the EC that is a compass and there are many dumpy levels are there. So in the introduction, the first one instrument that we will see that is a theodolite. So the theodolite is an instrument where we are using the instrument where by that uh, instrument we can use that thing by calculating the horizontal angle as well as vertical angle. The basic mainly if you say for the surveying or for the field work there are three major equipments are there. One is a dumpy level, second is a theodolite, and third one is a nowadays using there are
that is using a total station. So that we will see today the parts and the operations of the various instrument. So there are, if we start with the theodolite, so there are many advantages of the theodolite as compared to the dumpy level. So in a small projects, we will use, or in a field work, small projects, we will use the dumpy level for measuring the height or measuring the level of the site or of the station. But if we want to measure horizontal and vertical angles, at that time we are using the theodolite. There are many other advantages, but main advantages is to measure the horizontal as well as vertical angle. Also, we can find out the distance of the two station by the theodolite. So, in a classification of theodolite, you need to know that there are two types of major classification. That is a transit theodolite and non-transit. And second one is a vernier and no micrometer theodolites. So what is a transit and non-transit? What is the difference between two theodolites? Over here, I am asking, I am giving you the session about the brief of the everything that can be asked as you are sitting in a placement or if you are sitting in a front of the interviewer. So that may be asked in a question. So that topic we are discussing about today, that which kind of the questions that can be asked during the your interview session. So we will not go for the minor thing, only I am briefing about that thing and you learn that thing. There's this kind of the question may be asked or this kind of the thing can be asked in a field work. So understood that thing, we will not go for the deep analysis. So in a transit theodolite, so which theodolite is called that transit theodolite. So the telescope can be transisted, or we can say that it can be revolved through the complete revolution about its horizontal axis in a vertical plane. Or uh, another than non-transit theodolite cannot be transisted. That means the non-transit theodolite cannot be rotated or cannot be transited in a vertical plane or in a horizontal plane. So that is a non-transit and difference of the transit theodolite. Then second is a vernier and micrometer. So there are two types of the graduated circles are there into the theodolite. So in that there are two kinds of theodolite. If the graduated circle is with the vernier, at that time, that kind of the theodolite is called as a vernier theodolite, where if the micrometer is provided to read the circle, at that time it is called micrometer theodolite. So these are the types of the theodolite which is used for the practical work. So major, you can see the vernier types of the theodolite. Then these are the components. These are the section view of the theodolite. So in that the major part is divided into the three portion. Over here, that is a vertical axis is there. Then this is a telescope of the theodolite. In the telescope, one side is a objective is there, and another side is a eyepiece is there. Then there are two types of clamps are there. Over here you can see the vertical clamp is there, and over here there are another screws and other clamps are there for adjusting of the uh, theodolite as well as the telescope. And if you see over here, there are eyepieces given, then upper plate, vernier A and B. So there are two verniers are given over here. In that vernier A is provided and vernier B is provided for the horizontal axis. And over here, the vertical circle is placed. So vertical circle is placed. In that vertical circle, vernier C and vernier D is provided. So there are four verniers is provided for the measuring horizontal as well as vertical angle in the theodolite. So the role of the vernier A and vernier B. So role of the vernier A and B is to measure the horizontal angle, and the role of the vernier C and vernier D is to measure the vertical angle of the theodolite. Then below this part there are the leveling screw, and below that there is a tripod. So leveling screw is used for the leveling for the theodolite.
Then there are many terms are there that we are, if we did not go too deep, but centering, if we start with the centering, so what is the centering? It can be asked in an interview also. So what are the terms of the many terms are they have provided. So if you aware about the terms, then you can speak up. So centering. So what is the centering? So centering means setting a theodolite or setting in any instrument. If the total station is there, if there is a numpy level is there. So centering means setting any instrument which is used for the surveying exactly over the station to vertical axis, truly vertical. So if we provide, if the station A is marked and we have to set up the instrument exactly over the station, that process is called as a centering, and it can be done by the plumbo, as you can, as you have practical in a lab session. Then transisting. So what is the transisting? So transisting is a process of turning the telescope about the horizontal axis through 180 degree. That means if you turn the telescope towards the 180 degree, that means one side to the another side, that is called as a transisting. Then the swinging. The swinging, that means a turning telescope about is vertical axis in a horizontal place. Then the next is a face left and face right. So what is a face left and face right? That is a general equation, a general definition is there. So if the vertical circle of instrument is on the left side of the observer, there is a vertical circle is provided in front of the telescope. So the vertical circle of the instrument is provided left side of the observer. If we are observing the telescope or observing the theodolite, so the vertical circle is left side of our side. That is called as a face left. Then face right. So that is a vice versa. If the vertical circle of the instrument is placed on the right side of the observer, so that called as a face right. Then changing phase. So what is the changing phase? So changing phase is nothing but operation of bringing vertical circle to the right of the observer. If the vertical circle is left, or if it is a left, then it is a shifted to the right. So that process is called as a changing phase. Then another one, that is a line of collimation. So what is a line of collimation? It is also called as a line of sight. So that is an imaginary line joining the intersection of the crosshair of diaphragm and optical center of the object glass. So that is a axis of telescope and line of collimation. Both are the same. Then the vertical axis and horizontal axis is can be known by you. The vertical plane, the vertical axis, and horizontal plane and horizontal axis. Then the next topic is adjustment of the theodolite or adjustment of the dumpy level, or you can say adjustment of the uh, total station. These are the basic uh, process that we are using or that we are doing during the we can say before starting the survey work. So in that there are major 5 steps are there of the temporary adjustment of theodolite. So in that setting up, first one that is a setting up, centering up, then leveling up, then focusing of eyepiece, and last one is a focusing of the object glass. So these are the process of the temporary adjustment. So as you know that the what is the setting up, centering. Setting up is nothing but we have to set up the tripod over the station. Then we have to stretch out the legs of the tripod, and it should be around the 60 degree. Then if we doing the process of the centering, so we are in the centering process, we are doing we are placing the instrument exactly over the station. That is the done in a centering. Then leveling up. So into the leveling up, we have to level the instrument by the using of the foot screw. So there are two methods of the leveling. Generally, there are 3 foot screws are there. So if 4 foot screw are there, there is no 4 foot screw, but 3 foot screw are majorly used. So first of all, what are we doing?
we are placing the bubble to the uh, two sides, any two sides of the foot screw, and we will turn either inside or outside. We are rotating the foot screw either inside of the direction or outside of the direction of the foot screw. Then bubble will be centered. Then second step is we, we are placing the bubble to the perpendicular to the 2 foot screw, and the other third screw we are rotating the third foot screw, and we are centering the bubble. Again, same process will repeated 3 times. So this is a process of the leveling by 3 foot screw. Then the next is the focusing of eyepiece and object glass. So uh, that is a basic thing you can aware about that. That is, you can focus of eyepiece by uh, rotating the screw which is placed on the eyepiece, and also rotating the screw of the object. There is another screw is provided. So these are the temporary adjustment of the theodolite. Now we will moving over here after this. First of कर रहा है तो उसे डंपी लेवल का यूज़ आना चाहिए। और डंपी लेवल का यूज़ कब आएगा? जब आप उस डंपी लेवल से स्टाफ रीडिंग रीड कर पाओगे तब। दोस्तों डंपी लेवल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है साइड के ऊपर, कभी लेवल लेने पड़ते हैं, कभी देने पड़ते हैं, राइट दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों डंपी लेवल से होती है साइड पे, और रोज़ ही कोई ना कोई उसकी ज़रूरत पड़ी जाती है, राइट। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें डंपी लेवल का स्टाफ रीडिंग रीड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि डंपी लेवल सीखे, तो दोस्तों ये पार्ट से इंपॉर्टेंट ये आईपीस होता है दोस्तों। यहाँ से हमें देखना, हम यहाँ से देखते हैं जो स्टाफ है उसको। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है ये फोकसिंग शुरू होता है। जब हम आईपीस से देखते हैं तब हमें क्या करता है कि हमें पिक्चर क्लियर नहीं नजर आती, राइट। तो पिक्चर को क्लियर करने के लिए दोस्तों हमें ये जो फोकसिंग स्क्रू है, राइट, यहाँ पे जो फोकसिंग स्क्रू दिया है उसको घुमाना पड़ता है, जिससे हमारी जो पिक्चर होती है वो क्लियर होती है। मतलब स्टाफ जो है हमारा अनक्लियर होता है वो क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद नीचे दोस्तों 3 फुट स्क्रू दिए होते हैं ट्रायंगल जो शेप में, राइट, एक दूसरे को ट्रायंगल शेप में वो एडजस्ट होते हैं। उनको हमें रोटेट करके यहाँ पे दोस्तों एक बबल होता है जिसे हमें एक रिंग के अंदर सेंटर में लाना होता है, जिससे हमारा जो डंपी लेवल है एग्जैक्टली लेवल हो जाता है। मतलब उसकी लाइन ऑफ साइट जो हमें बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, राइट। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट थे अगर आप डंपी लेवल सीखना चाहते हैं, राइट। चलिए अब डंपी लेवल का स्टाफ रीडिंग कैसे करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक स्टाफ बनाया है, जैसे हमारा स्टाफ होता है सेम टू सेम मैंने यहाँ पे एक स्टाफ बना दिया है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ पे अलग अलग जो कैलिब्रेशन मैंने किए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक पोर्शन है, वाइट पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक और वाइट पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 0.1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर लिखा है। तो पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ दोस्तों। 1 ब्लैक एंड वाइट डिवीजन ऑफ 5 mm मतलब क्या है, ये ब्लैक पट्टी या फिर वाइट पट्टी दोनों क्या है 5 mm की है। मतलब यहाँ पे अगर मैं व्हाइट पट्टी देखूँ तो ये डिस्टेंस 5 mm होगा, ये भी 5 mm होगा। मतलब ब्लैक और व्हाइट पट्टी कितनी की है 5 mm की। अगर ब्लैक और व्हाइट पट्टी दोनों को गिने तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब ये 10 mm होगा, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 0 मीटर है, राइट। 0 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 0 मीटर है। उसके बाद 5 mm यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। ये 5 मीटर की पट्टी, ये कितना हो जाएगा और 5 मतलब 10 mm, राइट। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब एक वाइट और एक ब्लैक पट्टी मिला के 1 सेंटीमीटर होता है। तो एक वाइट एक ब्लैक मतलब 1 सेंटीमीटर। यहाँ ये कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर से ये 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 0.1 मीटर, राइट दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे हर एक स्टार्ट पे इस तरह से लिखा होता है, राइट। मतलब एक पार्ट हमारा 5 mm का है, व्हाइट पट्टी लो या ब्लैक पट्टी लो, व्हाइट और ब्लैक मिला के ब्लैक का जो टॉप पोर्शन है यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7, 8, 9, 10। मतलब यहाँ पे 10 हुआ। मतलब ये कितना हो गया 200 mm। 200 mm बराबर कितना सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 0.2
मीटर, राइट दोस्तों। इस तरह से हमें रीडिंग रीड करना है, बट हमें रीडिंग कितने कौन से यूनिट में रीड करना है, मीटर में रीड करना है, तो हम मीटर में रीड करेंगे। तो वो रीडिंग दोस्तों रीड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक रीडिंग में आपको रीड करके बताता हूँ। सपोज आपका जो क्रॉस हेयर है दोस्तों यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये दोस्तों रीडिंग कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर है। तो दोस्तों 0.1 मीटर के बाद कितने सेंटीमीटर है, देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों रीडिंग क्या होगा हमारा 0.9, 0.1 तो होगा, उसके बाद कितने सेंटीमीटर ऐड करने, 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 0.190, राइट। ये कितना हो गया, यहाँ पे 0 और 9 सेंटीमीटर मतलब 0.9 है, मतलब जीरो तो आपको लगा ही देना है, क्योंकि 3 डिजिट में हम रीडिंग लेते हैं, क्योंकि 5 भी आ सकता है, तो 5 कब आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रीडिंग कितना हो गया, 0.190। तो और एक रीडिंग ले लेते हैं। सपोज आपका जो बाइसेक हो रहा है, राइट, वो हो रहा है यहाँ पे, पिछली बार कहाँ था, ऊपर की तरफ, अब हो रहा है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अब गिनते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, 8 यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो गया, 8 और एक वाइट पट्टी है, मतलब 1.185, मतलब 0.185 मीटर हमारा रीडिंग आ गया। देखिए यहाँ पे 8 और 5 एम एम है, राइट, तो 18 सेंटीमीटर हुआ, 18 सेंटीमीटर और 5 एम एम मतलब कितना हो गया, 185 मीटर, राइट दोस्तों। इस तरह से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से आप गिन सकते हैं कि जब यहाँ पे 5 कंप्लीट होता है तो 6, 7, 8, 8 और 5 मतलब 0.185 मीटर, राइट दोस्तों। और एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, तो इससे आपको और अच्छे से याद रह जाए। देखिए सपोज यहाँ पे आपका बाइसेक्ट हो रहा है, तो आप Yes, so have you understand regarding this? Let me know in a chat box how to take the reading during the during the leveling or during the any kind of the survey work. So how to take the reading into the leveling staff. Let me know in the chat box, please, so we can move further. Yes. So this was the basic introduction about the leveling staff that can be using every time when you are calculating or when you are doing the survey work, any kind of the. Yes. So now for the basic site or basic site work, if you are going for the residential construction or if you are going for the commercial or any kind of the highway projects, so at that time, for the small construction site, the dumpy level can be used because the rate of the dumpy level is more, is less as compared to the total station. So total station is a very equipment, very well equipped or very technological equipment that can be cost higher to the company. So the company provides the dumpy level for the basic level of the preparation of the survey. So how to take or what is the use of the dumpy level, how we can use the dumpy level for the surveying or for the excavation or for the measuring the level. Let me show you over here the video तो इस regarding तरह से that. है, अभी इतना एक्सकवेशन हो गया है, बट मुझे Suppose this is your ground एग्जैक्टली ये condition जो आप and you लेवल need देख रहे to. हैं, एग्जैक्टली मुझे इस तरह से एक्सकवेशन करना है। तो ये लेवल का एक्सकवेशन कैसे करूँगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो लेवल है दोस्तों यहाँ पे वो आया या नहीं, राइट। अभी तो आप देख सकते हैं, बट जब Suppose you need to find out the leveling of this excavation. So what is the quantity of the excavation? How you can calculate or how you can point out the RL of the any kind of the points that can be provided by the dumpy level. हमें लाना पड़ता है, तभी जो है ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, राइट। तो हमारे पास आरएल होती है, नहीं भी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सकवेशन करना है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक बेंचमार्क होता है। जनरली दोस्तों रोड लेवल जो होता है, रोड का जो टॉप होता है, उसको बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है, या फिर ऐसा पॉइंट लिया जाता है जिसकी आरएल हमें पता हो। अगर आरएल पता भी नहीं है तो रोड का जो टॉप है उसको हम बेंचमार्क कंसीडर करते हैं, और उसका आरएल हम एज्यूम करेंगे कि 50 मीटर है, राइट दोस्तों। तो
तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है जिसको मैं बेंचमार्क कंसीडर कर रहा हूँ, रोड का टॉप भी हो सकता है, उसकी आरएल में 50 मीटर यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, चलिए अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टाफ खड़ा करना है। इसकी आरएल हमें पता है कि ये जो टॉप है उसकी आरएल कितनी है, 50 मीटर। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये जो है डंपी लेवल का यूज़ करके आपको ये स्टाफ पे रीडिंग लेना है। राइट दोस्तों, डंपी लेवल अच्छे से सेट कीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आप डंपी लेवल सेट करके ये स्टाफ पे रीडिंग लीजिए। स्टाफ का रीडिंग सपोज आया है 1.2 मीटर। राइट दोस्तों, ये जो स्टाफ यहाँ पे हमने खड़ा किया इसका रीडिंग कितना आया, 1.2 मीटर। ओके, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, एच आई फाइंड करनी, मतलब हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट, मतलब जो आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है। तो एच आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब डंपी लेवल, उसकी आरएल हमें फाइंड करनी पड़ती है। हमारे पास डंपी लेवल की आरएल 50 मीटर है और हमारे पास ये स्टाफ रीडिंग कितना आया, 1.2 मीटर। तो एच आई फाइंड करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क। राइट दोस्तों, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क। तो हमारी एच आई कैसे मिलेगी, आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना है, हमने एज्यूम किया 50 मीटर और स्टाफ रेटिंग कितना आया बेंचमार्क के ऊपर, 1.2 मीटर। तो दोस्तों एच आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें कितनी मिलेगी, 51.20 मीटर। राइट दोस्तों, सबसे पहला आपको काम यही करना है, आप कोई भी लेवल सर्वे करें सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंचमार्क पे अपना स्टाफ रख के बेंचमार्क पे एक रीडिंग लेना है। राइट दोस्तों, उसके बाद एच आई फाइंड करनी है। दोस्तों ये याद रखना, सबसे पहला काम हमें यही करना है, कोई भी लेवल सर्वे करे तो पहले एच आई फाइंड करना है। वो और वो कैसे फाइंड करेंगे, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क। राइट दोस्तों, तो दोस्तों हमारी एच आई कितनी आ गई, 51.20 मीटर। राइट दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि आपको अपने जो स्टाफ है दोस्तों, ये जो एक्सकेवेशन पीट है उसके अंदर अलग अलग जगह पे खड़े करने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने खड़ा किया, यहाँ पे मैंने खड़ा किया और यहाँ पे मैंने खड़ा किया। राइट दोस्तों, उसके बाद आपको बाइसेक्ट करना है। राइट दोस्तों, अलग अलग जगह पे स्टाफ खड़ा कीजिए, उसके बाद आपको फिर से ये जो तीनों स्टाफ है उस पर रीडिंग लेना है। तो सपोज पहले स्टाफ पे दोस्तों आपका रीडिंग आया 2.5 मीटर। राइट, पहले स्टाफ का जो स्टाफ रीडिंग है 2.5 मीटर। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों आप ये देख रहे हैं, राइट, ये जो पॉइंट है उसका आरएल कितना आ जाएगा, आरएल फाइंड करने का दोस्तों फॉर्मूला है कि एच आई माइनस स्टाफ रीडिंग। राइट दोस्तों, एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने फाइंड की थी माइनस हमारा जो स्टाफ रीडिंग करेंगे, तो आपको ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है उसकी आरएल मिल जाएगी। एच आई कितनी है 51.20, आरएल कितनी आई, स्टाफ रीडिंग कितना आया 2.50 मीटर। तो हमारी आरएल ऑफ दिस पॉइंट कितनी आई 48.70 मीटर। राइट दोस्तों, ये आरएल हमने फाइंड करने मैंने सिखा दिया कि एच आई ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग करेंगे तो आपको आरएल मिल जाएगी। और एच आई कैसे फाइंड करनी है, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस स्टाफ रीडिंग करेंगे तो आपको एच आई मिल जाएगी। राइट दोस्तों, एच आई चेंज नहीं होती है, स्टाफ रीडिंग चेंज हो सकता है। एच आई एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, बेंचमार्क पे रीडिंग लिया, तो जो एच आई आएगी वो सेम रहेगी। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने यहाँ पे स्टाफ खड़ा किया और हमारा जो स्टाफ रीडिंग दोस्तों यहाँ पे आया है 1.750 मीटर। राइट दोस्तों, यहाँ पे जो स्टाफ है उसका रीडिंग आया 1.750 मीटर। दोस्तों इसकी आरएल कितनी आएगी, एच आई माइनस स्टाफ रीडिंग। तो एच आई कितनी है 51.20, स्टाफ रेटिंग कितना आया दोस्तों हमारा 1.750, मतलब आरएल ऑफ दिस पॉइंट कितना आया 49.45। दोस्तों देखिए यहाँ पे आया कितना 48.70, यहाँ पे आया 49.45। दोस्तों इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल है इसके कंपेयर में ये जो ग्राउंड लेवल है नीचे है, या फिर ये जो ग्राउंड लेवल है उसके कंपेयर में ये जो ग्राउंड लेवल है हमारा ऊंचा है। ये दोनों के डिफरेंस में से आप पता कर सकते हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल से ये ग्राउंड लेवल दोस्तों हमारा कितना ऊपर है, ये आप पता कर सकते हैं। देखिए 48.70, यहाँ पे 49.45 है, मतलब ये ग्राउंड लेवल जो है हमारा ऊपर है। उसके बाद फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे, तीसरा जो स्टाफ हमने यहाँ पे रखा है राइट दोस्तों, उस पर रीडिंग लेंगे 3.2 रीडिंग हमारा स्टाफ रीडिंग आया है। जैसे आप बाइसेक्ट करोगे तो दोस्तों ये पॉइंट जो है दोस्तों उसकी आरएल कितनी आई, एच आई माइनस स्टाफ रीडिंग। तो एच आई कितनी 51.20 माइनस दोस्तों हमारा जो स्टाफ रीडिंग है 3.2, तो आरएल ऑफ दिस पॉइंट कितना आ गया 48। मतलब ये दोनों के कंपेयर में ये जो हमारा जो ग्राउंड लेवल है ये वो नीचे है। राइट, जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड लेवल है हमारा नीचे है। तो कितना नीचे है देखिए, इसके कंपेयर में 0.7 नीचे है। राइट दोस्तों,
और दोस्तों हमें जो एक्सकेवेशन करना है वो ये एक्सकेवेशन का आरएल कितना है 48 मीटर, मतलब ये जो स्टाफ रीडिंग है यहाँ पे लेवल हमारा सही है, मतलब हमें इतना एक्सकेवेशन करना है, राइट दोस्तों। तो अब दोस्तों ये यहाँ पे आरएल है, वो आरएल मुझे यहाँ पे लाना है, राइट। ये जो इतनी एक्सकेवेशन है, राइट, ये जो एक्सकेवेशन है एक्स्ट्रा, तो मुझे यही आरएल यहाँ पे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, राइट दोस्तों। ये जो आर एल है 48 का मुझे यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, पूरी जगह पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा कि स्टाफ को क्या करूँगा यहाँ पे रखूँगा, राइट। मतलब ये जो मिट्टी है मैं हटाना चालू करूँगा, इसका एक्सकेवेशन करेगा जेसीबी से, और फिर से हम क्या करेंगे स्टाफ को यहाँ पे रखेंगे, राइट दोस्तों। ये जो स्टाफ है दोस्तों उसको हम यहाँ पे रखेंगे जब तक दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टाफ रीडिंग, ये जो स्टाफ है यहाँ पे हमारा 3.20 नहीं मिल जाता, तब तक हमें एक्सकेवेशन करना है। जैसे ही दोस्तों हमें यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे हमें 3.20 का आरएल नहीं मिलता, तब तक हमें एक्सकेवेशन करना है। एक बार सारी जगह पे हमें 2.30 आरएल मिलने लगे, मतलब जितने भी पॉइंट है, आप जितना भी आपका एरिया वहाँ पे आपको कितना आरएल आना चाहिए 3.20, जिससे दोस्तों आपका जो ग्राउंड है दोस्तों एग्जैक्टली आपका ग्राउंड जो है दोस्तों लेवल हो जाएगा, राइट दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमें एक्सकेवेशन करना है दोस्तों। जनरली कभी भी बिल्डिंग साइट चालू होती है तो सबसे पहला काम एक्सकेवेशन होता है, और एक्सकेवेशन करने के लिए सिविल इंजीनियर को डंपी लेवल लेके खड़ा होना पड़ता है, और रेगुलरली दोस्तों उसको लेवल चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक सेम लेवल चाहिए ग्राउंड का, राइट दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों इस तरह से लेवल जो डंपी लेवल है दोस्तों इसका यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले आप एक फिक्स ले लीजिए कि आपको जो है आपका रीडिंग कितना आना चाहिए। हमें 48 का आरएल लेना है बॉटम पे, तो हमारा रीडिंग 3.2 आना चाहिए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सकेवेशन कराना है जब तक आपका रीडिंग सारी जगह पे 3.20 नहीं आ जाता, राइट दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमें डंपी लेवल का यूज़ करके एक्सकेवेशन कराना है, आरएल को ट्रांसफर। Yes, so regarding this, everyone understood what is a basic use or basic starting of the using of the DMP level can be by done by you. So let me know in a chat box. Are you aware about this thing? Have you understand this thing or not? So this is a basic thing when you are going, or first thing when you are starting the job of the site and the site work is going on the basic level. Now we will start with the third instrument, that is a total station. So let me share you again that video regarding this. So how to read the, how to, what is the total station, and also how to take the reading, first of all, that we will see. Yes. Now each of the this features is that the introductory video the video regarding the focuses on total Viva and station. Nova total stations and multi-stations. A manual total station requires that the user sights the target through the telescope and manually adjusts the horizontal and vertical screws to align the crosshairs to the target. A robotic total station is motorized, which means the telescope position can automatically turn, whilst in addition, using automatic target aiming, the total station can automatically search, aim to, and follow a reflective target. There are many benefits in using robotic total stations instead of manual total stations. Imagine you have to survey this road, stake out a few points, and measure detail on the side of the building. Using a manual total station, you would need a second person continually aiming the instrument to the target to measure the points. Using a robotic total station, Okay. Yes, there was a connection issue, I think. Yes. Let me start again.
Yes, the screen is visible now. Am I audible to you? With a robotic total station, the instruments can also be operated completely remotely by only one person, meaning as well as being quicker, you also save the costs of the second person and are in complete control of the data collection and quality. Let's see the one-person survey in action. The instrument will quickly find the target on the pole of the surveyor and lock to it. As the surveyor moves around, the instrument will follow the target, meaning they can fully concentrate on coding and measuring points. There are no delays waiting for the instrument to be pointed to the target, or struggling with communication, as there would be with a manual total station. Staking is also much faster, with the surveyor being guided directly to the points being staked, using graphics and sound. Again, no delays waiting for the instrument operator to manually aim and measure, and repeatedly wave or shout instructions to the surveyor. When it is needed to measure or scan a grid of points on a building, a robotic total station is also much faster. By defining the area to be measured, many hundreds or even thousands of points can be automatically measured in just a few minutes, meaning a massive time saving over using a manual total station. So in summary, there are many benefits in using a robotic total station. Faster finding the target, faster aiming and measuring points, no need for a second person, fewer communication problems, fully in control of data collection and quality, much faster measuring or scanning a grid of points. Now let's have a look at what features make all of this possible. We will look at automatic target aiming, automatic target lock, power search, and imaging. Automatic target aiming means the instruments can automatically aim to a reflective target, such as a prism. With the instrument roughly pointing towards the target, one button press will search, find, and automatically aim to the target, and the measurement will be made. There is no need to sight the target through the telescope and manually adjust the horizontal and vertical screws to align the crosshairs to the center of the target. Automatic target aiming provides fast and precise aiming and measuring, and reduces user fatigue when making repetitive measurements, such as during monitoring or topographic surveying. It works with any standard reflective prism, meaning there is no need to use a specially designed target, which requires batteries and adds weight to the pole. To learn more about how it works, please watch the automatic target aiming video. Automatic target lock means the instruments can automatically follow the target when it moves. This is known as being locked, as the crosshairs are locked to the target. Combined with continuous distance measurement, the position of the target can be continuously tracked, which allows rapid measurements to be made without the need to keep manually aiming at the target. Automatic target lock means the instruments can be operated remotely. There is no need for a second person to operate the instrument, meaning there are no delays with finding the target, aiming, measuring, and communicating. Again, it works with any standard reflective prism, meaning there is no need to use a special target that requires power. To learn more about how it works, please watch the automatic target. Power search first locates the target and then precisely aims to it. With power search, there is no need for the user to point the instrument towards the target. Together with automatic target aiming and lock, the instruments can be operated completely remotely. Power search is useful in a busy measuring environment where there are many interruptions in the line of sight to the target, and the target needs to be repeatedly and quickly located. To learn more about
Imaging allows the view from the instrument to be displayed onto the screen, using either an overview camera or, in addition, an integrated telescope camera. The image on the screen can be used to help with aiming the instrument without the need for the user to look through the telescope. Used together with robotic functions, the instruments can also be aimed by tapping on the screen, which will turn the instruments towards that point. This function prevents the need for the user to look repeatedly through the telescope, for example when making measurements to non-reflective targets such as buildings. This video gave an overview of the benefits of using robotic total stations and gave an introduction into the key robotic features. Other videos will So this was the quick overview about the robotic total station. So there are two total stations are there. Generally, we are using the manual total station, but right now the robotic total stations are also available. Now let us see about the how to calculate or how to take the reading on the total station. So let me share you the basic video regarding the basic introduction also that is about the total station. So this will see this is you are seeing over here to how to take a reading and how to measure the point on the total station. The first thing we need to start the new job. Start with the new job in the total station, and then we are providing the first point by the this is a reflecting prism over here. You will say so. In that there is a reflection of the laser beam is passing, and total station will read the reflection, and then measurement can be done. So directly total station will measure the distance as well as the height from the target. So the prism, center of the prism can be adjusted by the horizontal as well as vertical screw, which is present over the both side of the total station. So you need to rotate, or surveyor need to rotate the horizontal as well as vertical circle, a vertical screw for the focusing of the prism. So this how you need to take the reading from the total station. Now let us share you the real life example that how can be done during the on-site work. With more comfort. Do you have to solve various surveying tasks every day? Would you like easier handling and more flexibility? Speed up your work with tachymeters from the Leica TPS 700 Performance Series. Yesterday, a lot of your time was spent aiming at the target to be measured. Today, the TPS 700 does this for you with automatic target recognition, ATR. Automatic target recognition is efficient and reliable. New technologies open up new perspectives. Roughly aligned telescope with target point and trigger measurement. Precise targeting and data storage are performed automatically by the instrument. Automatic target recognition provides consistent precision in all situations, even at night when prisms are no longer discernible by the unaided eye. One more advantage. Automatic target recognition does not require special prisms or power supply. Just continue using the prisms you have, irrespective of the manufacturer.
whether for cadastral plans or for topographic surveys. Wherever many points have to be measured, the TPS 700 instruments offer a lot of advantages. For deformation measurements, ATR performs the repetitive and time-consuming task of precision target tracking, easily and quickly. Surveyor's daily nightmare. Hard to access targets, obstacles in the way, time-consuming, nerve-wracking, and hazardous work. The reflectorless distance measuring instrument brings relief. With the visible laser dot, surveys are performed quickly and safely. Aim laser at target to be measured, trigger measurement, and read off the measured value. Whether for cadastral plans, construction surveys, or measuring indoors. The reflectorless TPS 700 tachymeter makes hard-to-access measuring points a thing of the past. Gone are the days of tedious manual targeting. Today, that is done by motorized drives. TPS 700 tachymeters perform design positioning for staking out at a key press. Even for changing position and for calibration, the motorized drives help save a lot of time. Used with the integrated software, entire surveying processes can be automated. For example, with free stationing. Set up instrument in any desired spot and measure to 2 known points. Now, the TPS 700 computes the station's coordinates and performs the orientation of the instrument at a key press. With the TPS 700, you get many helpful extras included. For example, the measurement trigger located on the side of the instrument. It means that while measuring, you do not lose sight of the target. It is most helpful when a lot of points have to be measured. Or the sliding clutch and endless loop drive. No awkward clamping, tightening, and loosening. Instead, you just simply and comfortably turn the knob in the same direction. With the large display, you have all the information in front of you, displayable in many languages. With the alphanumeric keyboard, you can enter numbers, letters, and special characters as easily and as quickly as you can with your mobile phone. The TPS 700 is an economical package of energy. For the supply of power, no expensive special batteries are required. Instead, simple, inexpensive, standard rechargeable batteries are used. With the built-in Biaxial compensator, the TPS 700 is quickly leveled and ready for use. At a key press, the position of the instrument is displayed electronically. The visible laser plummet makes centering easy. You are quickly ready to take a measurement.
onboard programs support you in the most important surveying tasks. All data is saved to internal memory. With the included program Leica Survey Office, data can be converted into various data formats and transmitted to your application software. The TPS 700 is available in 3 classes of accuracy and in various levels of equipment. The base model, TC, with tried and tested Leica angular and infrared distance measurement. The TCR model, in addition, features reflectorless distance measurement. The top model, TCR Auto, offers, in addition to classic manual operations, all mentioned advantages like automatic target recognition or motorized surveying. With the TPS 700, you will work more comfortably and efficiently than you can imagine. Benefit from the new performance today. The TPS 700 Performance Series. Naturally, by Leica Geosystems. Yes. So this was the basic introduction about the automatic as well as manual total station. So let me know in the chat box any kind of the query from your side regarding the total station. Do you understand about the total station thoroughly? This was the basic intro. So let me know in the chat box. Okay, so this was the quick placement training regarding the surveying topic. In that, we discuss about the basic theories as well as basic components of the instruments as well as basic definition that can be asked for the or that can be used for the placement during the during you are sitting in front of the interviewer. So this was from my side, and regarding this, any kind of the query from your side, let me know in the chat box. Let me know in the chat box if you have any doubts or any query, or else I am concluding the lecture over here. Okay, so thank you all of you. Right now I'm concluding my lecture. So, and we will meet into the next session if we are doing the phase 2 of the, yes, I will share you the PPT. Uh, if you are doing the phase 2 of the placement training, then we will meet next time regarding this. So till then, goodbye everyone and have a great time. Thank you all of you. I will share the video so that you can see in the video that PPT.